How much more can your minds take in? और आप कितना ले सकोगे आपके अंदर? More? All right, we're going to see how much you can handle. देखते हैं आप लोग कितना ले सकते हो. We're going to talk about a real important topic here right now. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अभी. Although I guess they're all have been important topics, right? बट सारे कुछ जो मैंने बोला सब इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए. So now we're going to talk about how to become a disciplined leader. अब बात करेंगे कैसे आप एक डिसिप्लिन लीडर बन सकते हो. We've talked about the fact that I wrote this book called Little Things Matter. मैंने एक किताब लिखा है लिटिल थिंग्स मैटर. And in this book, I talk about many of the things that I find to be most important, but in total there are more than 1,000 little things that I've identified that matter. इस किताब में बहुत कुछ मैंने लिखा है जिसको लेके आप अच्छा बन सकते हो, बट इसमें करीबन 1000 चीज वैसे हैं जिसको लेके आप बहुत अच्छा बन सकते हो. Now, these little things are points like greeting somebody, how you're dressed. ये सारे जो छोटी छोटी बातें हैं ये पॉइंट्स है, जैसे किसी को आप ग्रीट करते हो, आप कैसे ड्रेस पहनते हो, Being on time for appointments, returning emails and calls in a timely manner. समय में आते हो, ईमेल को रिप्लाई करते हो, Listening, सुनना, not interrupting. इंटरप्ट नहीं करना. Many of the things you've learned over 2 days. और ये सारे चीजों को मैंने आपको आज समझाया भी है 2 दिनों के अंदर. But there is not one on my list that is more important than discipline. और उस लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिस्ट में है ये डिसिप्लिन. So what is discipline? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? Discipline is a pattern of behavior where you do what you a pattern of behavior where you do what you know you should do rather than what you want to do. डिसिप्लिन एक हमारा के बिहेवियर का पैटर्न है जो आप जानते हो आपको क्या करना है, हालांकि आप क्या करना चाहते हो उससे भी ज्यादा है क्या आप करना चाहते हो वो नहीं, क्या आपको करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. It's getting up early and exercising when you don't want to rather than sleeping in that you do want to do. सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना आपको करने को जरूर दिल नहीं है फिर भी आप करते हो एक्सरसाइज. It's eating the right food that's good and healthy for you rather than the food you want to eat that's not healthy for you. सही तरह के खाना खाना जो आपको मालूम है वो सही आपके लिए और गलत चीजों को नहीं खाना. It's doing what you know you should do even when you don't feel like doing it. वो ऐसा चीज है वो सब काम करना जो आपको करने को दिल नहीं है फिर भी आप करते हो. It's picking up that phone and making your prospecting calls when your heart's beating out of your chest and you don't want to make them. वो फोन कॉल जो आपके कान में लगा के आप बात करना नहीं चाहते हो फिर भी फोन को उठा के आप कान में लगाते हो. Brian Tracy, who wrote the foreword to my book, is the most recognized author in America on personal and professional development. ब्रायन ट्रेसी जो मेरा बुक का ऑथर है वो अमेरिका के सबसे बड़े प्रोफेशनल मोटिवेटिंग ट्रेनर है. उन्होंने बोला है ये बात. Over 60 books he has written on professional and personal and professional development. उन्होंने 60 से ज्यादा बुक लिखा है प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर. He said, if I had to pick the number one key to success, it would be self-discipline. उन्होंने बोला है अगर मेरे को एक नंबर 1 चीज बोलना है सक्सेस के लिए तो वो होगा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. It's the difference between winning or losing. और ये है वो चीज जीतना और हारने का डिफरेंस. It's the difference between greatness and mediocrity. ग्रेटनेस और मिडिल लेवल में रहने का डिफरेंस है ये. So why is it important? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Because without it, you won't do what is required of you to achieve your goals. बिकॉज अगर ये नहीं होगे आपके अंदर में तो आप कुछ वैसा काम नहीं करोगे जिसको करके आप अपने गोल्स को पाओगे. Out of all 1,000 little things on my list, it is the most difficult. हजारों चीजों के अंदर जो मैंने लिखा है अपने लिस्ट में ये सबसे मुश्किल काम है. Very few people have discipline because it is so difficult. बहुत कम लोगों के अंदर डिसिप्लिन है बिकॉज ये बहुत मुश्किल चीज होता है. Yeah, it's hard to get up early when you don't feel like it to exercise. हाँ ये बहुत मुश्किल है आपको सुबह में उठने के लिए अगर आपको
एक्सरसाइज नहीं करना, फिर भी आप करते हो एक्सरसाइज। It's hard to make those prospecting calls when you don't feel like making them. बहुत मुश्किल होता है वो प्रोस्पेक्टिंग कॉल करने के लिए जब आपको दिल नहीं होता करने के लिए। But here's the great news. बट ये सबसे अच्छा खबर है, Discipline is a learned behavior, डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं। meaning that the person sitting next to you wasn't born with it and has some unfair advantage over you. इसका मतलब दो आदमी आपके बगल में बैठा है, ये वो जन्म से डिसिप्लिन नहीं है। In the sports world, there are some people who are born who are just better athletes because of the family pool they were born from. स्पोर्ट्स के दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका बिल्ड अच्छा रहता है और ऐसे भी है उनके ट्रेडिशन रहता है उनके घर में। But nobody has an advantage over you. बट हमारे इस डिसिप्लिन के बारे में अगर बोलूं तो आपके ऊपर किसी का एडवांटेज नहीं होता। You can become the most disciplined person in this room by making a decision to become more disciplined and then not only becoming more disciplined but practicing it and over again. आप इस रूम में सबसे अच्छा डिसिप्लिन आदमी बन सकते हो अगर आप इसको डिसीजन ले लेते हो कि मैं बनूंगा ऐसा आदमी और उसको प्रैक्टिस करते हो। Not only is discipline critical to your success, but it is also the ultimate accelerator to any great accomplishment. डिसिप्लिन सिर्फ आपके सक्सेस के लिए बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको डिसिप्लिन रहोगे तो आपको स्पीड भी आएगा सक्सेस पाने के लिए। As an example, when I was 23 years old and I started selling real estate, there were many agents that had an advantage over me. जब मैं 23 साल का था और मैं रियल एस्टेट के में करियर में उतरा, मेरे सामने बहुत लोग थे जो मेरे से भी अच्छे थे। I had no experience. मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, I didn't drive the nicest car. मेरे पास अच्छा गाड़ी नहीं था, I didn't have the special designations that many other real estate agents had. मेरे पास कुछ स्पेशल टाइटल भी नहीं था जो लोगों के पास होता है, But I had discipline. पर मेरे अंदर था डिसिप्लिन। I also had a pregnant wife और मेरे पास एक मेरे वाइफ थे जो प्रेग्नेंट थे, with our first child, वो हमारा पहला बच्चा भी था and I had no money. और मेरे पास पैसा नहीं था। So I sat down with my heart beating out of my chest, hyperventilating, making call after call after call after call. और मैं डर के बैठ के वो कान में फोन लगा के कॉल ही करता रहता था हमेशा। There were many days that I would make 300 phone calls in a day. कुछ दिन ऐसा भी था मैंने 300 फोन कॉल किया दिन में। And it was because of my discipline that my first year selling real estate at age 23, I made more than $250,000 US. और इस काम को करते करते 23 साल की उम्र में मैंने $2,50,000 का इनकम किया है। So while everybody else had more experience than me, I had discipline. अभी यहाँ बहुत लोग थे जो मेरे से अच्छे एक्सपीरियंस थे, सक्सेसफुल थे, पर मेरे अंदर था डिसिप्लिन। It offset many of my weaknesses. और मेरे जो खराबी चीज भी मेरे अंदर थे वो सब लोगों को दिख नहीं पा रहा था। And because so few people have discipline, for me it was the ultimate accelerator to my success. जैसे कि बहुत कम लोगों के पास होता है डिसिप्लिन, मेरे पास वो था और मेरे को काफी स्पीड आया सक्सेस पाने के लिए। So I'm going to share with you 12 ways to become more disciplined. मैं अभी आपको 12 तरीका सिखाऊंगा कैसे आप बन सकते हो एक डिसिप्लिन आदमी। And remember, the more disciplined you become, your example will cause others within your organization to become more disciplined. और आप जितना डिसिप्लिन होते हो अपने ऊपर, उतना ही आपके नीचे वाले लोग भी अपने ऊपर उतना डिसिप्लिन हो जाएंगे। And as you become more disciplined, you'll be a better teacher to those within your organization of how they can become more disciplined. जैसे ही आप अपने ऊपर डिसिप्लिन लाते हो, आप एक अच्छा ट्रेनिंग भी दे सकते हो, सिखा भी सकते हो लोगों को कैसे बनना चाहिए डिसिप्लिन। So the first way that you can become more disciplined is to make a commitment that you will become disciplined. So सबसे पहला आप अपने ऊपर कमिटमेंट दीजिए कि मैं एक डिसिप्लिन आदमी बनूंगा। Your goal is that I will become a disciplined person. आपका गोल होगा कि मैं एक डिसिप्लिन आदमी बनूंगा। So many times in life it's just a decision that you are going to do something and you will do it regardless of the obstacles in your path. हमारे जिंदगी में बहुत बार यही होता है कि सिर्फ हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है बस। The second way to become more disciplined is to read and visualize your goals daily. और दूसरा है अपने गोल्स को पढ़िए और चिंता कीजिए अपने माइंड के अंदर।
What I encourage all of you to do is to not only write down your goals, but I recommend that you make a visual board of your goals. मैं सिर्फ आपको नहीं बोलूंगा कि आप गोल्स को लिखिए, पर एक बोर्ड बनाइए जहां आप अपने गोल्स को देख सकते हैं. If there's a home that you dream about, get a picture of it and put on your board. अगर आप एक घर का सपना देख रहे हो, उस घर का फोटो लेकर आओ और उस बोर्ड में लगा दो. If there's a car you're dreaming about, take a picture of it and put it on your board. अगर आप एक कार के बारे में सपने देख रहे हो, उस कार का पिक्चर लाओ और अपने बोर्ड में लगा दो. If there's places in the world that you want to travel, take pictures of those places or find them in magazines and put them on your board. जहां जहां आप ट्रैवल करना चाहते हो दुनिया भर में, उन जगह का फोटो लाओ और अपने बोर्ड में लगाओ. And here's why this will increase your discipline. और ये मैं दिखाता हूं आपको, बोलता हूं क्या होता है डिसिप्लिन. Because if every day you look at these things that are important to you, it'll cause you to have more motivation to be disciplined in doing the things that you don't feel like you should do but are required to achieve those goals. जब जब आप इस बोर्ड में देखोगे, जो पिक्चर आपने लगाया है उसको देख देख के आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, आप वो सब काम करना शुरू करोगे जिसके लिए जो करके आप वो सब पा सकते हो. You see, everybody dreams of a better life. सब लोग एक अच्छा लाइफ का सपना देखते हैं, But it requires that your desire be so strong that you will do what is required of you to achieve the things that you want. बट आपके डिजायर के अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सारा वो काम करोगे उसको पाने के लिए. So my recommendation is review your dream board every day and use it as motivation to pick up that call to do the things that you know you should do. मैं ये एडवाइस करता हूँ आपको कि अपने ड्रीम बोर्ड को रोज देखिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मैं वो फोन पकड़ूं और एक कॉल करूं. Number 3 is start by doing the little things that you know you should do. उसके बाद आप शुरुआत में छोटी छोटी कामों के ऊपर नजर दीजिए और वो सब कीजिए. You see, when you build your confidence in doing the little things, you'll have the confidence to do the big things. जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा छोटी छोटी कामों को करने के बाद, तो आप बड़े बड़े काम कर पाओगे. So what are some examples? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. Maybe picking up your shoes and putting them in the closet rather than leaving them on the floor. मे भी आप अपने जूते को उठा के एक अच्छी जगह में रख सकते हो. Maybe rather than leaving your dirty socks over there, you go put them where your dirty socks belong. आपके सॉक्स को जहाँ पड़ा हुआ वहां से उठा के जहाँ उसको होना चाहिए वहां रख दो. When you get done having your cup of coffee or tea, rather than leaving it on the table, how about going and cleaning it up and putting it away? आप जो चाय या कॉफी पीते हो उस कप को वहां पड़ा मत रखिए, उसको जाके वहां रखिए जहाँ उसको रखना चाहिए. How many times do you wake up and your bed is unmade and you say, I don't feel like making my bed? कितने बार ऐसा होता है आप सुबह उठते हो और आपका बिस्तर को आप नहीं बनाते. I'd rather just go on with my day and leave my bed unmade. ऐसा हो सकता है, होता होगा कि आप काम में चले जाते हो और आपका बिस्तर वैसे का वैसे पड़ा रहता है. But a little thing would be making your bed. बस छोटा बात ये हो सकता है कि आप अपने बेड को अच्छी तरह बना दो. You see, if you push yourself to do all these little things, then you will have the confidence that when it comes time to do the hard things, you'll say, I can do it. जब आप अपने आप को ठेलोगे छोटी छोटी काम करने के लिए, तब जाके आप बड़ा बड़ा कुछ भी काम कर सकोगे. Next is start each day doing what you know you should do first. हर एक दिन को आप स्टार्ट कीजिए जो आपको मालूम है सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, वो उस काम को हाथ में लीजिए. Do the hardest things that you don't want to do first. सबसे मुश्किल काम जो आप करना नहीं चाहते उसको पहले कीजिए. When I was in real estate and I would prospect every single day, I did it first thing in the morning. मैं जब रियल एस्टेट में था और मैं प्रोस्पेक्ट करता था लोगों को, तो मैं सबसे सुबह सबसे पहले यही काम करता था. Why did I do that? मैं क्यों करता था वो काम? Number 1 is first thing in the morning, I have more energy. मैं इसलिए करता था कि पहले सुबह में मेरे पास बहुत एनर्जी होता है अंदर. It's easier to have discipline when you feel good. आपके अंदर में डिसिप्लिन होना बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास एनर्जी होता है. It's hard to have discipline at the end of the day when you're tired. डिसिप्लिन को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है दिन के आखिर में. Even as I prospected in this business, I always try to do it first thing in the morning. इस बिजनेस में भी मैं अगर प्रोस्पेक्ट करता हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट सबसे पहले सुबह करना चाहता हूँ. And here's a little secret that I have found. और ये है सीक्रेट मेरा जो मैंने सीखा है. People are much more receptive to your phone call first thing in the morning. जो लोगों को आप फोन करोगे सुबह वो आपको ज्यादा सुनेंगे. As days go on, as the day goes on, people start getting caught up in all the things they have to do that day. They start feeling pressure.
ऐसे जैसे दिन चलता रहता है, दिन चलने के साथ लोगों के अंदर दूसरे दूसरे तरह के प्रेशर आते रहते हैं। Yeah, first thing in the morning, people are relaxed and more receptive to taking your call. सुबह सुबह लोग रिलैक्स होते हैं और आपको ज्यादा सुनेंगे वो। First thing in the morning, people are home and they're not out running around in all the traffic. और सुबह सुबह लोग घर में रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। Another big advantage of doing it first thing in the morning is that it's done. और ये और दूसरा एडवांटेज, अगर सुबह से पहला काम करते हो वो काम खत्म हो जाता है सुबह सुबह। Because if you don't do it first thing in the morning, you know what you're thinking about all day? अगर आप वो सुबह सुबह नहीं करते तो पूरा दिन उसके बारे में सोचते ही रहते हो आप। Oh, I gotta make my prospecting calls. मेरे को कॉल करना पड़ेगा आज, Oh, I gotta make my calls. मेरे को कॉल करना पड़ेगा आज। And all day long you're saying, I gotta make my calls. और पूरा दिन यही बोलते रहते हो, मेरे को कॉल करना पड़ेगा। Yeah, that's a drain. और ये तो आपको ड्रेन आउट कर देता है। But if you do it first thing in the morning, you're like, yes, I'm done. और अगर ये आप पहली बार करते हो, सुबह में आप बोलते हो मैंने काम कर लिया है अपना, And then you have more energy the rest of the day because you're proud of yourself. और उसके बाद आपके पास बहुत एनर्जी आ जाता है और आपको अपना ऊपर प्राउड फील करते हैं आप, Yeah, you did the hardest part and you feel great. क्योंकि आपने सबसे मुश्किल काम किया है और आपने उसे खत्म किया है। So for those of you who are full time, set a goal to prospect every morning. जो लोग फुल टाइम में हो, आप एक गोल सेट कीजिए कि सुबह सुबह आप प्रोस्पेक्टिंग कॉल करेंगे। Now you don't want to call when people are sleeping. आप तब कॉल मत कीजिए जब लोग सोते रहते हैं। So determine when you feel is the right time to call people. तो आप डिटरमाइन कीजिए कि आप कौन से समय में उनको फोन करेंगे। But I will bet you this, if you will make those calls first thing in the morning, people will be more receptive. मैं ये बोलने सकता हूँ आपको गारंटी के साथ कि जब आप सुबह से फोन करेंगे लोग आपको सुनेंगे ज्यादा, They won't be distracted. तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, When you're done, you'll feel great. और जब आपका काम खत्म हो जाएगा आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे And you will be proud of yourself. और आप अपने आप से प्राउड फील करोगे। Number 5, hold yourself accountable. अपने आप को अकाउंटेबल कीजिए। Now, most people when they're born, they're being held accountable by their mom and dad. हमारे जिंदगी में जो हम जन्म लेते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको देखते हैं। They go to school, they're held accountable by their teachers. जब स्कूल जाते हैं तो टीचर उनको अकाउंटेबल करते हैं। They then get a job and they're held accountable by their boss. नौकरी में जाते हैं तो बॉस उनको अकाउंटेबल करते हैं। You see, most people aren't used to holding themselves accountable. देखिए अभी ज्यादातर लोग हमारी जिंदगी में अकाउंटेबल नहीं हो सकते हैं। In the United States, 97% of the people work for the other 3%. हमारे यूनिवर्सिटी में 97% लोग वो है जो 3% के लिए काम करते हैं। So when people join a business like this, they're not used to holding themselves accountable. तो हमारे जिस तरह के बिजनेस में जब लोग आते हैं तो यहाँ भी क्या होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। So here's a little secret for you. अब ये हमारा सीक्रेट। How many times have you said, I need to find more people like myself? कितने बार बोला आपने कि मेरे को मेरे जैसे लोग चाहिए? Yeah, you've all said that, right? But there's not enough people like you to build a successful business. पर आपके जैसे बहुत कम लोग हैं जो इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। If you're going to build a massive business, you're going to have to do it with the mass of the population. अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको पूरे पॉपुलेशन को लेकर करना पड़ेगा। So since people are used to being held accountable, for you leaders, you should be focused on holding your people accountable. जैसे ये अकाउंटेबल का प्रॉब्लम है तो आपको फोकस करना है अपने लीडर्स के साथ कि वो अकाउंटेबल बने। Yeah, so people who aren't used to holding themselves accountable, have them report back to you every day that they've made their calls. जो लोग अकाउंटेबल नहीं है वो लोग आपको रिपोर्ट नहीं करते कि उन्होंने क्या किया, कितना कॉल किया है रोज। I have a new lady in the United States I'm working with, and every day she sends me a message telling me that she's done her prospecting for the day. यूनाइटेड स्टेट्स में मेरा एक लेडी है जिन्होंने मैंने ज्वाइनिंग किया है, वो मेरे को रोज डेली रिपोर्ट करती है उन्होंने क्या क्या काम किया है रोज। She even sends me a picture of the names of the people that she called. वो हमको पिक्चर ही भेजती है किस किस को उन्होंने फोन किया है। And as a result of me holding her accountable, she is much more productive. मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ और उसको लेते हैं, उसको करने के बाद उनके अंदर से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। She knows every day I got to send Todd a message. वो जानती है कि रोज टॉड को मेरे को मैसेज सेंड करना पड़ेगा। So she has to push herself to do what she knows she should do and what she agreed to do. तो उसको अपने आप को पुश करना पड़ता है बिकॉज उनको टॉड को मैसेज करना पड़ता है डेली।
So my first challenge to all of you is you need to hold yourself accountable. So मेरा सबसे पहला चैलेंज ये है कि आप अपने आप को अकाउंटेबल कीजिए. And then if you want to build a big army of people, you need to learn to have your leaders, to hold your leaders accountable and have them report back to you that they're doing what they should be doing until such time they're able to hold themselves accountable. और अगर आपके नीचे जो लोग हैं उनको भी ऐसे कीजिए कि आप अकाउंटेबल कीजिए, मेरे को रिपोर्ट कीजिए, ताकि उतने समय तक रिपोर्ट कीजिए जब तक आप अपने आप को संभाल नहीं पाते. This little tip about holding your people accountable will make a huge difference in your business if you will implement it. ये छोटा सा टिप कि आप अपने लोगों को अकाउंटेबल सिखाइए, ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है. Everybody I get started in the business, I'm first of all talking to them every day, making sure they're inviting correctly. जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं पहली बार, मैं उनको सिखाता हूँ कि आप इनविटेशन सही तरीके से कर रहे हो. I'm making sure that they're making the number of calls that they have agreed to make. और मैं ये भी बोलता हूँ कि आपने जितना कॉल मेरे को बोला था आप करोगे, उतना कॉल कर रहे हो कि नहीं. And I do it every day until such time that I don't need to talk to them every day. और मैं उनसे रोज बात करता रहता हूँ, तब तक बात करता रहता हूँ जब तक मेरे को समझ में आता है कि अभी मैं बात नहीं करने से भी वो काम करता रहेगा. And then I have them send me a message every day that they've made their calls. उसके बाद मैं यही बोलता हूँ कि आप मेरे को मैसेज करो कि आपने कितना कॉल किया है. So like this lady I'm referencing, I talk to her every day initially. जिस लेडी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं शुरुआत में इनके साथ डेली बात करता था. I talked to her about every call that she made and I asked her how she invited them. हर एक कॉल के बारे में उससे पूछता था और वो कॉल कैसे किया सब पूछता था मैं उसको. I asked what the response was. मैं पूछता था उसका रिस्पांस क्या था. What then she said. उसने क्या बोला. What the person said in response to that. उसने क्या बोला. What she said. उसने क्या बोला. What the person responded by saying. उसने क्या रिस्पॉन्ड किया. How she got a commitment. उसको क्या मिला कमिटमेंट. I then compliment her on each of those. फिर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने सही तरीके से काम किया. And then I give her little refinements to help her have greater results in her invitations. उसके बाद मैं थोड़ा सा रिफाइनमेंट के बारे में बोलता हूँ, क्या क्या कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हो. And then we move on to the next person she talked उसके to. बाद हम दूसरे आदमी के बारे में बात करते हैं. And by talking to my people every day, I'm helping them dial in and really refine their invitation. डेली अगर मैं इनसे बात करते रहता हूँ तो मेरे लोगों को मैं सिखाता हूँ किस तरह से सही तरह से काम किया जाता है. If they're discouraged, I can encourage them. अगर वो थोड़ा सा लो फील करता है तो मैं उनको एनकरेज करता हूँ. But one of the other big benefits of me talking to them every day is that I'm holding them accountable to them making the calls that they've agreed to make. और डेली का बात करने का मतलब है मैं उनको अकाउंटेबल करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए रोज का. So all of you are presidents and CEOs of your own companies. आप लोग सब प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो अपने अपने कंपनी का. And part of your role as the president and CEO of your own company is to first hold yourself accountable to doing the things you know you should be doing. उसका मतलब आपका रोल होता है कि अपने आप को पहले अकाउंटेबल कीजिए. And then it's to hold accountable the people that need to be held accountable until such time that they're able to do what is expected of them without you holding them accountable. फिर आपके नीचे वाले लोगों को सिखाइए कि आप मेरे ऊपर अकाउंटेबल होइए ताकि आप करते करते आप अपने आप को काबू में ला सके. Now, if you're somebody who has a hard time holding yourself accountable, then get an accountability partner. अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं कर सकते तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को खोजिए. Yeah, sometimes people who need an accountability partner to exercise, they'll have somebody that they walk with every day. कभी-कभी हम लोग एक्सरसाइज करते समय भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के खोज में रहते हैं. Or somebody that will say, hey, I did my exercise today, and then you have to respond and let them know you've done your exercise for the day. इसमें क्या होगा कि एक आदमी बोलेगा मैंने अपना एक्सरसाइज किया और तुम बोलो तुमने क्या किया. Maybe you're somebody that needs help, and so you pick somebody in your organization, and that we agree every day to make 3 invitations, and that we're going to text each other or send each other a WhatsApp message as soon as we've made our invitation. मे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा आदमी है जो आपको हेल्प चाहता है, उसको बोलो कि आप 3 कॉल करना, मैं भी 3 कॉल करूंगा डेली का, और डेली हम लोग हमारे मैसेज को एक्सचेंज करेंगे. And if it's a person who's full time, then set a goal that we are going to make our 3 invitations by 10 a.m. और अगर वो फुल टाइम में है तो उसको बोलो कि हम लोग 3 इनविटेशन करेंगे 10 बजे तक सुबह का. So by setting a deadline, then it forces each person to do it first thing in the morning rather than to let it linger on all day. तो ये डेडलाइन सेट करने के बाद दोनों लोग में कंपटीशन आ जाता है और दोनों लोग काम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं. The 7th way to increase your discipline is to make a decision of what you're committed to doing in advance, and then when the time comes, you do it. दूसरा है जो भी आप करोगे
एडवांस में उसका कमिटमेंट आपको लेना चाहिए ताकि जब समय आए उसको आप पूरी तरह से करो. As an example, you make the decision that every morning at 6 o'clock your alarm's going to go off. जैसे आप एक डिसीजन लेते हो कि 6 बजे मैं अलार्म सेट करता हूं घड़ी का. When the alarm goes off, you don't say, "Oh, I'm tired today, I'm sleeping in." और जिस तरह अलार्म बजता है आप नहीं बोलते कि आज मेरे को और सोना है. You get up. आप उठ जाते हो. You've made the decision that every day at 7 o'clock you're exercising. और आपने डिसीजन लिया था कि रोज 7 बजे आप करोगे एक्सरसाइज. When 7 o'clock comes, you don't say, "Oh, I don't know if I'm going to exercise today." No, you made the decision at 7 o'clock you're exercising, and yes, you're going to exercise. जब 7 बज जाता है तो आप नहीं बोलते कि मेरे को मन नहीं है करने एक्सरसाइज का, बिकॉज आपने पहले ही बोला था ये बात कि 7 बजे मैं करूंगा एक्सरसाइज. You make a decision that every day at 8 a.m. you start making your prospecting calls. आपने डिसीजन लिया था कि रोज 8 बजे मैं प्रोस्पेक्टिंग कॉल करूंगा. At 8 o'clock, not 8:01, not 8:02, you sit down, you put the phone to your ear, and you start making the calls. 8 बजे आप बैठ जाते हो चेयर में और आपके फोन को कान में लगाते हो और फोन करना शुरू करते हो. And by making the decision in advance when you're going to do the things you don't feel like doing, it will give you the edge because it will cause you to say, "Okay, I agreed to do this at this time, and I am doing it." जब आप एडवांस में कमिटमेंट लेते हो तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपको करना भी नहीं चाहते हो, फिर भी आपको बिकॉज आपने पहले बोला था उसको करने के लिए आप पूरी तरह लग जाते हो. I'm holding myself accountable. मैं अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड कर रहा हूं. I am the president and CEO of my company. इस कंपनी का मैं ही सीईओ हूं, मैं ही चेयरमैन हूं. And I'm going to build a successful company. और मैं एक बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा. I've got big dreams and goals. मेरा पास बहुत बड़ा सपना है और गोल है. I want to be a diamond. मैं एक डायमंड बनना चाहता हूं. And I'm going to do what's required of me to be a diamond. और मैं करूंगा जो भी करना डायमंड बनने के लिए. You see, sometimes these conversations you have with yourself can be powerful. ये सब बातें अगर अपने साथ करते रहते हो तो बहुत पावरफुल हो सकता है कभी. Yeah, I'm going to do what I agreed to do, and I'm not making excuses. मैं वो सब करूंगा जो मैं करना है और मैं बहाना नहीं बनाऊंगा. And when it comes to discipline, it's important that you follow through with your decision to do what is required of you when you've agreed to do it. और जब हम बात करें डिसिप्लिन का, उसका मतलब है आपने जो बोला था मैं करूंगा उसको पूरी तरह से करना. The eighth way to increase your discipline is to do the things that will increase your energy levels. दूसरा बात, ऐसे ऐसे काम कीजिए जिस काम को करके आपका एनर्जी ज्यादा होता है. Drinking matcha will increase your energy. जैसे माचा पीना. Yeah. Not eating the wrong foods will keep you from being tired. गलत चीज खाओगे तो आपको टायर्ड लगेगा. Yeah, yesterday we went and we had a big lunch. कल हम लोग ने बहुत बड़ा लंच खाया. We all talked afterwards about how we were all a little tired after that big lunch. सबने उसके बाद हमने बात किया कि हमको कितना टायर्ड लग रहा है लंच खाने के बाद. See, you know your body better than anybody. आप अपने बॉडी को अच्छी तरह पहचानते हो. Yeah, make sure you're doing the things that bring energy to your body, not the things that take energy from your body. ऐसे ऐसे कुछ खाइए जो आपको मिलता है एनर्जी, बट ऐसी चीज मत खाइए जिससे आपको नहीं मिलता एनर्जी. Make sure you're getting the sleep you need so that you've got the energy the next day to have the discipline required to push yourself to do the things to achieve your goals. आपका नींद भी ठीक समय में आना चाहिए, ठीक समय तक सोना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट दिन के लिए आपके अंदर एनर्जी हो. And don't drink too much the night before, because if you drink too much the night before, you'll be tired the next day. और रात को ये ज्यादा मत पीजिएगा, बिकॉज अगर ज्यादा पियोगे रात को तो सुबह सुबह आपको बहुत टायर्ड लगेगा. And how is it that you're all laughing? You don't even have alcohol that you can buy in your state. आप लोग क्यों हंस रहे हो? आपके स्टेट में तो अल्कोहल ही नहीं है. Underground black market alcohol, right? Number 9, create productive habits, rituals, and routines. आपको ऐसे हैबिट क्रिएट करना है जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है. And I touched base on this a little bit a minute ago when I talked about making decisions in advance. अभी मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. You see, if you will set up your day when you get up at the same time every day, जब आप हर एक दिन एक ही समय में उठते हो,
You exercise at the same time every day. आप एक्सरसाइज भी उसी समय में करते हो You make your prospecting calls at the same time every day. और आपके प्रोस्पेक्टिंग कॉल भी उसी समय में करते हो You go to bed at the same time every day. रात को सही समय में उसी समय में सोते हो You have dinner at the same time every day, so you're not eating at the end of the day before you go to bed. रात को भी उसी समय में खाते हो खाना So you set up these rituals, these routines, these habits in your life, ये सारा रूटीन और ये हैबिट अपने लाइफ में आप सेट कर देते हो and these types of things will bring your life greater happiness and success. और ऐसे करते करते आपके लाइफ में बहुत खुशहाली आएगा Number 10. Oh, stop making excuses. इसमें है बहाना बनाना बंद कीजिए Yeah, here's what you have to say. ये आपको बोलना पड़ेगा इस तरह से I'm done making excuses in my life. बहुत हो चुका बहाना बनाना मेरे जिंदगी में I will not allow an excuse to come out of my mouth. मैं अपने मुंह से एक बहाना भी नहीं निकालूंगा आज से I will not allow my fingers to type an excuse. मेरे अंगुली को भी मैं टाइप में नहीं लगाऊंगा कि वो एक्सक्यूज के बारे में टाइप करे किसी एसएमएस में If you will just make the decision that you are done making excuses, जब oh आप- my gosh, your life will change forever. जब आपने अपने आप में ये बात कर दिया कि मैं और बहाना नहीं बनाऊंगा आपका लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाला है And you know what's worse than excuses? आपको मालूम है बहाना से भी खराब क्या चीज है Justifying your poor excuses. बहाने को और जस्टिफाई कराना Well, I'm going to sleep in today because I didn't sleep well last night. मैं आज और लंबा सोऊंगा बिकॉज कल रात को मैं अच्छी तरह नहीं सोया I'm going to sleep in today because I drank too much last night. मैं आज सोऊंगा बिकॉज कल रात को मैंने काफी ज्यादा पी लिया I'm going to sleep in because I went to bed late last night. अब मैं ज्यादा सोऊंगा बिकॉज कल रात को मैं देरी से सोया No, no excuses. ये सब बहाना मत दीजिए This is a big one, friends. ये बड़ा वाला है No excuses. कोई बहाना नहीं Number 11, when you do things you know you should do, recognize and reward yourself. जब आप जानते हो आप क्या करना आपको क्या करना है आप उसको करते हो तो अपने आप को एक रिवार्ड दीजिए If it's hard for you to prospect, each day when you're done prospecting, give yourself a pump. Yeah, I did it. जब आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है जो आप नहीं करना चाहते और आपने कर दिया प्रोस्पेक्टिंग पूरे दिन में तो अपने आप को एक बड़ा रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को Go look in the mirror and say, I'm proud of you. आप शीशा के आगे जाके बोलिए कि मैं तुमको बहुत चाहता हूं And if you prospect every day for a week, maybe go see a movie or whatever it is that you enjoy doing. अगर आप रोज प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो एक सप्ताह के लिए तो अपने आप ऐसे भी कर सकते हो एक पिक्चर देके आइए आप Yeah, see, part of being the president and CEO of your own company, nobody's recognizing you for doing what you should be doing. You have to recognize yourself for doing what you should be doing. क्योंकि आप सीईओ हो चेयरमैन हो आपकी कंपनी का कोई आपको नहीं देख रहा है आपको खुद जाके अपने आप को रिवॉर्ड करना पड़ेगा Yeah, every day I prospect, I give myself a little pump. जब मैं रोज प्रोस्पेक्ट करता हूं मैं अपने आप को भी एक पंप देता हूं रोज And I say, I did it. मैंने कर दिया Yeah. And it feels good. और बहुत अच्छा लगता है मेरे को Yeah. Number 12, make your daily mantra. आप अभी अपना एक मंत्रा कीजिए डेली का मंत्रा Anytime I don't feel like doing something I know I should do, then I will say to myself, if I don't feel like doing it, then I must do it now. जब भी ऐसा कभी हो कि मेरे को कुछ करना है और मैं उसको करना नहीं चाहता तो मेरे को बोलना पड़ेगा तब तो मैं इसको अभी ही करूंगा So you get ready to walk out of the bedroom and you see the bed's not made. जब आप देख रहे हो कि आपके रूम से बाहर जा रहे हो आपका बिस्तर खराब पड़ा हुआ है And you say, oh, I don't feel like making my bed. आप बोलते नहीं आज नहीं करना हमको Uh-oh! I said I don't feel like making my bed. I better do it now. मैं बोला है कि आपको मैं ये नहीं अभी इसको करूंगा You're laying in bed at night. The garbage man comes early in the morning. You realize you didn't take out the garbage. You say, well, I don't feel like getting out of bed and taking out the garbage. And then you say, if I don't feel like doing it, I must do it now and get out of bed and take out the garbage. आप सो रहे हो और आपके घर का कचरा पड़ा हुआ है घर के अंदर में सुबह आएगा कचरा वाला आपको बाहर निकालना है और आप सो रहे हो आपने बोला मेरे को नहीं निकालना ये चीज नहीं करना तुरंत आपको जूता पहनना है कचरा को लेना है और बाहर रख के आना है
So anytime you don't feel like doing something you know you should do, you immediately say to yourself, if I don't feel like doing it, then I must do it now, and immediately without hesitation do it. आप अपने आप से हमेशा बोलिए, जब भी ऐसा सिचुएशन हो आप वो काम को नहीं करना है, जैसे ही आपका मन बोलता है नहीं करना है तो आपको बोलना है इस काम को मैं अभी ही करूंगा। And don't allow excuses. और बहाना बनाना बंद। And then worse, don't justify the excuse. और सबसे खराब चीज तो उसको बहाने को जस्टिफाई भी मत कीजिए। Friends, if you want to live a professionally successful life, discipline must become part of what defines you. दोस्तों, अगर आपको एक प्रोफेशनल सक्सेसफुल लाइफ आपको लीड करना है तो डिसिप्लिन आपके लाइफ में होना ही पड़ेगा। When I say it defines you, that means when you die and people come to your funeral and they're talking about you, they talk about you as being one of the most disciplined people they know. ऐसा हो सकता है कि आप जब मर जाते हो तो ऐसा होना चाहिए, मरने के बाद जो लोग जमा होंगे आपके तो वहाँ में, तो वो बोले कि ये आदमी जो था सबसे डिसिप्लिन आदमी था इस दुनिया में। Now, it's important to understand that either you're disciplined or you're not disciplined. ये समझना बहुत जरूरी है, आप डिसिप्लिन हो सकते हो या डिसिप्लिन नहीं हो सकते। There's no such thing as being disciplined in Unicity and then not being disciplined in the rest of your life. ऐसा कुछ चीज नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में होंगे डिसिप्लिन और अपने अपने लाइफ में होंगे आप नहीं होंगे डिसिप्लिन। Most of the people I spend my time with are successful people. जिन लोगों के साथ मैं समय बिताता हूँ वो ज्यादातर लोग सक्सेसफुल है। We tend to hang around people like ourselves, all of us. हम लोग अपने जैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। And what I notice about these people is they are disciplined in every part of their life. और ये सब लोग अपने पूरे लाइफ में सभी जगह में डिसिप्लिन है। When I go to their homes without them expecting me, the homes are always clean. जब मैं उनके घर में जाता हूँ तो उनका घर भी साफ सुथरा होता है। When I get in their car is always clean. उनका गाड़ी में बैठता हूँ तो उनका गाड़ी भी हमेशा साफ रहता है। Yeah, they're disciplined in every part of their life. वो डिसिप्लिन हर एक जगह में होता है अपनी दुनिया में। So don't be thinking I need to be disciplined with Unicity. आप ये सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ होना है डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी में। You want to be saying I am a disciplined person in every part of my life. आपको बोलना है कि मैं एक डिसिप्लिन आदमी होऊंगा मेरे लाइफ के चारों तरफ। Yeah, there's no separation. इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। You're either disciplined or you're not disciplined. आप डिसिप्लिन हो सकते हो या डिसिप्लिन नहीं हो सकते। Here's a bonus benefit. यहाँ में आपका एक बोनस मिलेगा बेनिफिट। And this is a big bonus benefit. ये बहुत बड़ा बोनस बेनिफिट है। I don't believe there is anything that will improve your self-image, your self-esteem, or your self-confidence more than when you do the things you know you should be doing when you don't feel like doing them. आपका जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ इमेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा काम में आएगा जब आप इस तरह के काम करोगे जो काम आपको करना है और आप करना नहीं चाहते वो फिर भी करते हो। For two reasons. One is when you're disciplined to do what you know you should do when you didn't feel like doing it, you always will feel good that you did what you should have done. दो कारण हो सकता है, बिकॉज जब भी आपको लगे कि मेरे को ये काम नहीं करना पर आप जानते हो ये काम बहुत जरूरी है और आप उस काम को करते हो, काम तो को कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। Anytime you do something hard, you feel good when you're done. जब भी आप कोई मुश्किल काम करते हो उस काम को खत्म करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। So first of all, when you do the things you know you should do that you don't feel like doing, you're going to feel good that you've done them. उसी तरह जैसे आप जो काम आपको करना है और वो आप करते हो, उस काम को करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। But here's the other part. When you do those things, you stop having those conversations with yourself that, oh, I didn't do what I should have done. जब आप ये सब काम करते हो तो वो नेगेटिव कन्वर्सेशन आपके पास नहीं आता। I slept in today. मैं ज्यादा सो गया। I know I shouldn't have slept in. मेरे को इतना देरी सोना नहीं चाहिए था। Yeah, I didn't exercise today. मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया आज। Yeah, I didn't make my prospecting calls. मैंने प्रॉस्पेक्टिंग कॉल भी नहीं किया आज। I lack discipline. मैंने अपने आप को नहीं संभाला। I don't have the ability to hold myself accountable. और मैं अपने आप को अकाउंटेबल भी नहीं किया। You see, when you don't do the things you know you should do, you end up having negative conversations with yourself. जब आप जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं करते तो आप अपने आप से नेगेटिवली बात करते रहते हो। And those negative conversations bring you down. और वो नेगेटिव जो कन्वर्सेशन है आपको नीचे तक ले आता है। If you have a lot of them, they lead to depression. और वो ज्यादा हो गया नेगेटिव तो आपको डिप्रेशन भी आ जाएगा।
But if you do the things every day to advance your life that you know you should be doing, you're going to be proud of yourself. बट अगर आप रोज अपने आप को ठेलते रहते हो, जो काम आपको करना है वो आप करते रहते हो, आपका लाइफ बहुत एडवांस हो जाएगा. You're going to walk different. आपका चलने का तरीका भी अलग हो जाएगा. You're going to sound different. आपका आवाज भी दूसरा हो जाएगा. You're going to look different. दिखने में भी आप अलग हो जाओगे. Yeah. You see how this bonus benefit can have a big benefit on how you feel about yourself? आपको आ रहा है समझ में ये बोनस बेनिफिट क्या होगा? To achieve what you've never achieved before, you must become someone you've never been before. जो चीज आपने कभी नहीं पाया तो आपको ऐसा कुछ बनना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं बना. You've got this dream of a better life. You've never been there before, right? ये सपना आपके पास आया है कि एक अच्छा जिंदगी का. That means you need to become someone you've never been before. ये जो सपना है ये आपने कभी नहीं देखा था, इसका मतलब है आपको ऐसा कुछ बनना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं बना. You must be willing to do what you've never done before. आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपने कभी भी नहीं किया. You see, for your life to improve, you must improve first. आपके जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको. You're not happy with your life, for things to change, you must change first before anything else changes. आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो और अच्छा करना चाहते हो, उससे पहले अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा. So, the number one most important key to success is having the discipline to do what you know you should do every day, even when you don't feel like doing it. तो सबसे नंबर वन रीजन अभी हो गया हमारा, आपको वो काम करना है डिसिप्लिन के लिए, वैसा काम जो आप करना नहीं चाहते फिर भी आप डेली उस काम को करते रहते हो. So my challenge to you is this. अभी आपके लिए चैलेंज ये है, Make a decision right now while you sit in that chair that you will become a disciplined person. इस कुर्सी में बैठ के जब आप बैठे हुए यहाँ में एक डिसीजन लीजिए कि मैं सबसे डिसिप्लिन आदमी बनना चाहता हूँ. You're done with life as it's been known. आपका जो लाइफ चल रहा था इससे पहले वो हो चुका, अभी बहुत हो चुका. You're ready for a better life starting today. अभी आप एक अच्छे लाइफ की तैयारी में हो. And that you're going to start every day doing the things you don't feel like doing first. और हर एक दिन आप उसी काम को करोगे जिस काम को आप नहीं करना चाहते, पहले उसी काम को करोगे आप. And that you're done making excuses. और बहाना बनाना बंद. And you're done justifying poor excuses. और बहाने को जस्टिफाई करना भी बंद. And that today is the day. और आज वो दिन है. My new beginning is today. I am now a disciplined person and I'm going to live it every day. ये मेरा नया जिंदगी बिगिनिंग है और मैं इसी तरह अपने जिंदगी को बिताऊंगा. How many of you are committed to starting today to become more disciplined? कितने लोग हैं आप आज से कमिटमेंट लेते हो कि मैं डिसिप्लिन होऊंगा? All right, let's do it. या So I have until 1 o'clock, which is 25 minutes. अभी मेरे पास और 25 मिनट का समय है 1 बजे तक. So I've got 2 topics I'm going to talk about. अभी मेरे पास 2 टॉपिक और है. You ready for some more, or can you not handle anymore? आप क्या और हैंडल कर पाओगे या हो चुका बहुत? You ready for some more? और कुछ? All right. The first thing I'm going to talk about right now is how to successfully lead up weekly meetings in your market. अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप एक सक्सेसफुल मीटिंग अपने मार्केट्स में कर सकते हो. Are we okay? So, I'm going to review some things that are going to help you leading up more successful meetings in your market. अभी मैं उसी के बारे में आपको बोलूँगा. The first thing is the location of your meetings. सबसे पहला है आपकी मीटिंग के लोकेशन के बारे में. If you want to have large, growing, thriving meetings, you need to select a location that is centrally located to the market you want to develop. अगर आपको बड़ा अच्छा मीटिंग करना है तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो सेंटर में हो कहीं. The further that people have to travel to your meeting, the fewer people are going to come. अगर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तब बहुत कम लोग आएंगे. Now understand that the impression of our business begins when people pull up at the location of your meeting.
हमारे मीटिंग का इंप्रेशन तभी होता है जब लोग उस मीटिंग में जमा होते हैं. If it's a dumpy location, your people are going to have a negative first impression. अगर लोकेशन ठीक नहीं हो तो हमारा इंप्रेशन खराब होता है. So select a location that presents a positive image of our business. तो ऐसा लोकेशन सिलेक्ट कीजिए जो हमारे इमेज को पॉजिटिव कराता है. Now, how does the room look? ये रूम कैसे दिखता है? Yeah, you want to get there early and put up banners and make it look nice. और आपको जल्दी आना है और रूम के अंदर बैनर लगाना पड़ता है आपको. And request others to come and help you set up the room. और दूसरे टीम मेंबर को रिक्वेस्ट करना है कि आप भी जल्दी आइए ताकि हम लोग रूम को रेडी कर सकें. Have somebody who's willing to accept the responsibility of setting up the product display. और एक आदमी को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराइए. ठीक Find है. somebody else who's willing to accept the responsibility of setting up the banners. और एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जो बैनर सेट करेगा. Find somebody else who's willing to accept the responsibility of setting up the registration table. और एक आदमी को आप रजिस्ट्रेशन टेबल के पास बैठाइए. And remember, when people then walk up to the registration table as a guest, how they're greeted makes a difference, और right? जिस तरह से रजिस्ट्रेशन टेबल में जो बैठा रहता है वो आदमी लोगों को किस तरह से ग्रीट करता है. Are they greeted with sign in here? और या बोलते हैं सिर्फ वो आप यहाँ साइन कीजिए. Or how are you doing today? और पूछते हैं आप कैसे हैं. Are you a guest? आप क्या गेस्ट हैं. You don't say, are you a guest or a distributor? Are you a guest with us today? आप नहीं बोलते कि आप गेस्ट हो या डिस्ट्रीब्यूटर. आप पूछते आप गेस्ट हो क्या. Well, welcome. आइए. वी आर वेलकम. My name is Todd Smith. How are you doing? मेरा नाम टॉड स्मिथ है. आप कैसे हो. We're grateful that you've joined us today. अच्छा लगा है कि आप हमारे मीटिंग में आए आज. If you have a registration sheet for guests, have them register. अगर आपके पास कुछ शीट है जहाँ उनको नाम लिखना है तो उनको दीजिए. वहाँ वो नाम लिखते हैं. So whoever works the registration table needs to be somebody who's going to greet people with a warm welcome. जो बैठेगा रजिस्ट्रेशन टेबल में वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो आदमी लोगों को सही तरह से ग्रीट करे. Now think about this. सोचिए इसके बारे में. They pull up in front of the location. It's impressive. वो आता है लोकेशन में. वो देखता है लोकेशन काफी अच्छा है. They walk up to the registration table and they're greeted with a warm welcome. रजिस्ट्रेशन टेबल के तक पहुंचता है और जो आदमी उसको रिसीव करता है बहुत अच्छा वेलकम करता है उसको. They come in the room and the room looks good. और जब रूम के अंदर घुसता है तो रूम बहुत अच्छा दिखता है. Banners are set up. सभी जगह बैनर है. Beautiful product display. प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो रहा है. If you're leading up a big meeting, maybe having a few balloons or something would look nice. बहुत बड़ा मीटिंग है तो कुछ बलून भी होना चाहिए साइड में. So whatever you can do to enhance the appearance of the room is going to reflect well on our business. ये सारा कुछ जो आप कर सकते हो एक रूम के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए आप कर सकते हो. Encouraging the people in your market to come dressed in a professional way. Again, when people are guests, they look, wow, everybody looks really nice here. जो लोग आपके लोग अपने लोग हैं उनको बोलिए कि आप अच्छी तरह से ड्रेस करके आइए. बिकॉज जब लोग देखेंगे उनसे वो इम्प्रेस हो जाएंगे. Not bad. Good looking people. काफी अच्छा लोग हैं इसके पास. Yeah, and what I always taught my people when I led up my weekly meetings, and I had 400 people a week at them, was number one, make sure your people come early. जब मेरे पास 400 लोग होते थे वीकली मीटिंग में तो मैं अपने लोगों से बोलता था कि सबसे पहला आप समय में आइए. I would teach my people in the room that you don't ever talk to the person next to you. और मैं ये बोलूंगा जब आप लोग बैठे रहते हो आपके साइड वाले लोगों से बातचीत मत करते जाइए. If they try to talk to you, to say, shh, we'll talk when we're done. जब वो अपने साथ आपसे बात करना चाहते तो बोलो चुप बैठिए थोड़ा. Because the guest sitting right over here notices what everybody's doing here. Because जो गेस्ट पीछे बैठे हैं वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है रूम के अंदर. And if there's people whispering around the room, they're going to be distracted. और जब वो बात करते रहते हैं तो गेस्ट जो है वो हो जाता है डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है. Every meeting you come to, you put your phones on silent, no vibration, no noise, nothing. हर एक मीटिंग में जब आप आते हो तो आपका फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए. And it doesn't matter if it's the 25th time that you've heard that speaker give a presentation, you give that speaker your full attention. ऐसा नहीं कि वो आदमी जो बात कर रहा है उसको आपने शायद 25 बार सुना होगा, बट जब वो बात करता है तो उनको पूरी तरह से सुनिए. Because the guest sitting back there can't tell who's a distributor and who's a guest. Because जो गेस्ट बैठे रहते हैं पीछे में उनको नहीं मालूम चलता कौन डिस्ट्रीब्यूटर है कौन गेस्ट है. So if you're sitting down and you're looking at your phone, that guest is saying, "Oh, that person's not interested." तो अगर आप बैठे हो आप फोन की तरफ देख रहे हो तो गेस्ट देखता है कि ये आदमी तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा. Not only are they saying that person's not interested, they're distracted by that person who is texting. ये सिर्फ यही नहीं बट उनको देखने के बाद वो गेस्ट भी काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. So you never pull out your phones in the meeting. तो उसका मतलब फोन मीटिंग्स में अपने फोन को मत निकालिए बाहर.
and you give that speaker your full attention, and even if you've heard the joke the 25th time, you laugh like it was your first. अगर वो जो मीटिंग दे रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, अगर उसने आपको चुटकुला सुनाया कुछ जो 25 बार उसने बोल चुका है, फिर भी आप हंसिए. So now think about this. अभी इसके बारे में सोचिए. Person shows up at the meeting. वो आदमी आया मीटिंग में. Nice location. अच्छा लोकेशन. They walk inside. Nice registration table. अंदर आते हैं, अच्छा लगा उनको रजिस्ट्रेशन टेबल. There's a banner out by the registration table. टेबल के बगल में बैनर भी है. They're greeted with a warm welcome by the people sitting at the registration table. जो बैठे टेबल में उन्होंने अच्छा ग्रीटिंग भी किया उनको. They come in the room and the room looks good. तो रूम के अंदर आए तो रूम बहुत अच्छा दिखा. People are greeting them and welcoming them. लोग हैं उनको ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं सब. The meeting starts right on time, not 1 minute late. मीटिंग एकदम समय में स्टार्ट हो, 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ. Wow, impressive. ये तो देख के वो काफी चौंक गया एकदम. Everybody looks good. सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं. No conversations. कोई बात नहीं कर रहा. Everybody's interested in the meeting. सब इंटरेस्ट ले रहे हैं मीटिंग के तरफ. Nobody's pulling out their phones. कोई भी अपने फोन को नहीं निकाला बाहर. Can you imagine if you're a guest in that room how you're going to feel? You're going to be impressed, आप right? इमेजिन करो अगर उस रूम में आप गेस्ट हो तो क्या फील करोगे आप. Remember, it's the little things that matter, friends. इसका मतलब छोटी छोटी बात को It's not just having the business briefing. मतलब सिर्फ मीटिंग मतलब नहीं, बट और कुछ होना चाहिए. Now, for the people who are giving the presentation, it's very important that you take your responsibility seriously. जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको काफी सीरियसली इसके ऊपर सोचना है. Because if people don't have confidence in the presentation, they won't bring their prospects to it. जब लोगों के आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा लोगों का, तो लोग दूसरे लोगों को नहीं बुलाएंगे मीटिंग में. Just this last week in the United States, we had a conference call. हमारे स्टेट्स में हमारे कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट वीक. And it wasn't a good conference call. और ये कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छा नहीं हुआ. One of the people who was participating was in the middle of a softball game where there was all kinds of noise. एक पार्टिसिपेंट जो कॉन्फ्रेंस कॉल में था वो एक सॉफ्ट बॉल गेम में था जहां से बाहर का आवाज बहुत आ रहा था. Some of the people talking just rambled. और जो बात कर रहे थे उनका बात समझ में नहीं आ रहा था हमको. And the feedback was negative. और जो फीडबैक मिला उस कॉल के ऊपर में बहुत नेगेटिव था. So who's going to put their prospects on the next one? तो इसके बाद अगर हम लोग बोले कि कॉल में आइए तो कौन कॉल में आएगा प्रोस्पेक्ट्स? Not very many people. मेरे को श्योर लगता है कोई ज्यादा लोग नहीं आएंगे इस कॉल में. It's going to take us weeks to restore confidence in our conference calls because of one bad call. अभी हमको समय लगेगा, मे बी 1 सप्ताह का समय लगेगा सिर्फ एक आदमी के लिए दोबारा इसको अच्छी तरह करने के लिए. So for those of you who run your meetings, when you're on stage, you are a professional. तो जो लोग आप लोग मीटिंग करते हो और आप स्टेज के ऊपर हो, आपको इसको प्रोफेशनली करना चाहिए. You see how I'm including everybody in my talk rather than just talking to a small section of the room? आप देख रहे हो कि मैं पूरे रूम को देख रहा हूँ, नहीं कि ना कि मैं एक जगह में ही देख रहा हूँ. Over the last 2 days, how many times have I just rambled on? आप 2 दिन में क्या आपको लगा कि मैं सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ? How many times have you said, why is he talking about that? आपने कभी बोला क्या ये बात क्यों ऐसे कर रहा है? I have been clear. मैं एकदम क्लियरली बात कर रहा था. I have been focused. मैं फोकस के साथ बात किया. I have said what I need to say using the fewest number of words possible. मैंने सारा कुछ वही बोला, सबसे कम शब्दों में बोला. And that's how you need to present. और इसी तरह आपको भी करना है प्रेजेंट. And you never put somebody up on stage to present any part of our business who is inexperienced. कभी भी आप ऐसे आदमी को स्टेज में मत लाइए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. And you don't put anybody on stage who hasn't first proven themselves as a leader. इस तरह के आदमी को भी मत लाइए स्टेज में जिन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है एज ए लीडर. Because when you put somebody on stage at your weekly meetings, you're saying, hey, this is a big person. This person's important. क्योंकि जब आप किसी को स्टेज में लाते हो तो आप बोलते हो ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है या इम्पोर्टेंट आदमी है. And if they haven't built a business and all of a sudden they quit, you know what your people are saying is, what happened to Joe? I don't see him anymore. और अगर उस आदमी ने अभी तक बिजनेस नहीं बनाया और हमारा बिजनेस छोड़ देता है, तब लोग पूछेंगे वो आदमी कहाँ है अभी?
So when I ran my meetings, I would never have anybody play any role in my meeting unless I had 100% confidence that they would get up there and do a great job. जब भी मैं मीटिंग करता था मैं किसी को ऐसे नहीं बुलाता था जब तक मेरे को उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस ना हो तब तक मैं उसको स्टेज में नहीं लाता था. And I would never have anybody get up and give a testimonial who hasn't first been trained on how to give a testimonial. और ऐसे आदमी को मैं स्टेज में भी नहीं लाऊंगा जिसने कभी भी टेस्टिमोनियल नहीं दिया है. पहले उसको मैं सुनूंगा उसके बाद मैं लाऊंगा टेस्टिमोनियल करने के लिए. And if I have a group of people who are going to come up and give a business testimonial, I say I would like for each of you to say your name, your background, and maybe what's most impressed you about Unicity in less than 2 minutes. अगर कोई ग्रुप हो और उन लोग अपना अपना टेस्टिमोनियल दें मेरे सामने तो मैं उनको बोलूंगा आप स्टेज में आके आपका नाम बोलिए, आपका बैकग्राउंड बोलिए और आपको क्या अच्छा लगा यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 मिनट के अंदर. Now, Kishore, come here. If Kishore's giving a testimonial and he's talking too long, I'm going to walk over to him. And that's going to be a clue to him. He better finish up. अगर किशोर यहाँ दे रहा है टेस्टिमोनियल और वो लंबा बात कर रहा है तो मैं उनके सामने जाके उनको मैं ऐसे ही करूँगा और उनको शायद समझ में भी आ जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है. First of all, while he's here, let's give him a hand for all this translation. And if somebody takes too long in the line, I always say, again, please share your name, your background, what's most impressed you about Unicity in less than 2 minutes. I want to make sure I reiterate this so nobody else goes long because he talked too long. तो यही है जो वो आदमी आएगा उसको बोलूंगा आपके टेस्टिमोनियल के लिए आपका नाम बोलिए, आपका बैकग्राउंड बोलिए और आपको क्या अच्छा लगा 2 मिनट के अंदर. Now, you also want to take pride in the PowerPoint presentation you use. और आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपको काम करना है. It needs to look consistent. वो आपको एक जैसा दिखना चाहिए. You don't want a blue slide, a red slide, a black slide. आपको रंग बिरंगी स्लाइड नहीं होना चाहिए. ब्लू, ब्लैक, रेड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. And you don't want things on your slide that the people in the back of the room can't see. और स्लाइड का ऐसा होना चाहिए कि पीछे वाले लोग को भी दिखना चाहिए स्लाइड को. Because the sharpest people who are at your event, the ones you want, will be sitting there saying, I can't even read their slides. जो लोग आपके पास आएंगे जो सबसे शार्प है स्मार्ट लोग हैं वो बोलेंगे कि आपके स्लाइड्स को हम पढ़ भी नहीं सकते. And just as the way they're greeted impresses them, the way the room impresses them, your slide presentation plays a big role in how impressed those prospects are. जैसे आपके रूम के बारे में वो इम्प्रेस्ड हुआ, लोगों को देख के इम्प्रेस्ड हुआ, आपके स्लाइड्स को देख के भी वो इम्प्रेस होना चाहिए. When I close out my meetings, as you'll hear this afternoon, I always say this. जैसे मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ, जैसे आप सुनोगे आज मैं आज जैसे क्लोज करूंगा मैं ऐसे ही बोलता हूँ. For those of you who are guests here today, you've got 3 options. 2 लोग हमारे बीच में गेस्ट हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है. One is that you have an interest in our business. एक हो सकता है कि आप हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है आपका. And if that's you, we'd love to answer any questions you have and help you determine if this is the right business for you. अगर वैसा है तो मैं आपसे आप मेरे को प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. The second option is for those of you who have an interest in our products. सेकेंड हो सकता है ये सब लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं. And if you have an interest in our products, we'd love to be able to help you understand their benefits and determine if they're right for you. अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको और समझा सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं आप. And your third option is you're not interested in the business or products. और थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आपको बिजनेस में भी इंटरेस्टेड नहीं है और प्रोडक्ट्स में भी नहीं है इंटरेस्ट. And if that's you, that's okay. और अगर वैसा है तो वो भी बात ओके है. We know our business isn't for everybody. हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस सभी के लिए नहीं है. And we know our products aren't for everybody. और हमारे प्रोडक्ट्स भी सभी के लिए नहीं है. But we're grateful you came here today. पर बहुत अच्छा है कि आप आए हो आज. And I would just ask for those of you who are guests to turn to the person who invited you and let them know your decision. और जो गेस्ट है मैं आपको ये बोलना जो जिसने आपको बुलाया है उनसे बात कीजिए. And then I say thank you so much and I wrap it up. और मैं बोलता हूँ फिर थैंक यू सो मच और मैं वहाँ क्लोज करता हूँ मीटिंग को. And then I always taught my people you stay seated. और मैं बोलता हूँ अपने लोगों को आप बैठे रहिए. If the whole room is seated, who's going to stand up? Not your guest, right? या अगर सब रूम बैठे रहते तो कौन उठेगा? Because what happens when everybody stands up? क्या होता है जब सब लोग खड़े हो जाते हैं? What's the next thing that happens? उसके बाद क्या होता है? They start to walk out of the room, right? वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं.
So you always turn to your guest and say, so what's your decision? तो आप बैठे बैठे पोजीशन में अपने गेस्ट को देख के पूछिए क्या डिसीजन है आपका, Or you just turn to your guest after that kind of close and just look at him. और क्लोज जब मैं करता हूँ उसके बाद गेस्ट को आंखों में देखिए And you wait to hear what their answer is. और रुकिए वो क्या बोलता है आपको. See, friends, it's the little things. ये सारा छोटा छोटा बात है. Now, how long should your meetings be? आपका मीटिंग कितना बड़ा होना, कितना लंबा होना चाहिए. I don't recommend your meetings ever go more than an hour and 10 minutes maximum, including product and business testimonials. आपका मीटिंग 1 घंटा 10 मिनट होना चाहिए प्रोडक्ट्स और टेस्टिमोनियल लेने के बाद. No more than an hour and 10 minutes. इससे ज्यादा नहीं, 1 घंटा 10 मिनट. There's been a lot of research done on this, and when you start going over an hour and 10 minutes, you start losing people. और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुआ है. जब आप नए लोगों को 1 घंटा से 10 मिनट बैठा देते हो तो बहुत कुछ हो सकता है उसके बाद. And when you invite people to your meetings, you say, hey, the meeting starts at exactly this time, and will never be more than an hour and 10 minutes, but after, when it's done, I'd like for you to leave your afternoon or evening open so that we can go have a cup of coffee and talk about what you learned. तो इसके बाद के मीटिंग के बारे में आप बोलिए हमारे मीटिंग एग्जैक्ट टाइम में स्टार्ट होगा और ये 1 घंटा 10 मिनट चलेगा और पर मीटिंग के बाद हम लोग बाहर जाके कॉफी या चाय भी पी सकते हैं. So when you invite people to the events, you want to then go out afterwards and sit down and spend time with them. आपको ये चाहिए कि मीटिंग के बाद उनके साथ बाहर जाइए और उनके साथ और कुछ समय बिताइए. You don't want them rushing out the door and going home. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग खत्म हुआ वो बाहर निकले और घर चले गए. Now I could go on, there's more ideas, but I think I've shared with you enough on how to lead up a successful weekly business briefing. मैं तो और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं पर मैंने शायद आपको काफी कुछ बोल दिया है कि इसमें एक मीटिंग को सही तरह से कैसे चलाना पड़ता है. I do recommend as well that you have them consistently at the exact same time, at the exact same location every week. मैं ये बोलना चाहता हूँ एक लोकेशन फिक्स कीजिए, हमेशा एवरी वीक वहाँ मिलिए, उसी समय में मिलिए. How many times does your church change locations? आपका जो चर्च है वो लोकेशन कितनी बार चेंज करता है? How many times does where you go to worship have different times? This week we started this time, and this week we started this time. कितने बार है आपके मंदिर का लोकेशन चेंज होता है? Yeah. So be consistent. तो इसको आपको सही तरह से एक ही जगह में करना चाहिए. If you're consistent, all your people know what to expect. अगर आप ऐसे करते रहते हो तो सब लोग आपको जानेंगे कि आपके साथ हम लोग क्या पा सकते हैं. Ask your distributors, what feedback could you give us that would help us do a better job with our events? अपने लोगों से पूछिए कि और हम लोग क्या कर सकते हैं इस इवेंट को और अच्छा करने के लिए. One of the things that I do, especially here in India, and I did it before this event, is I said, I want to make sure I got fresh batteries in all our microphones. मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिया में जब आता हूँ मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे माइक्रोफोन में फ्रेश बैटरी होना चाहिए. Because many of the facilities I've gone in India, it seems like they leave the batteries in until they're dead and you got mics cutting in and out. Because इंडिया में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे स्पीकर के नीचे में जो बैटरी होता है वो लोग उसको चेंज नहीं करते बहुत दिन तक. I also recommend that you have your own remote control. और मैं यही बोलता हूँ कि आपका अपना रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, अपना पॉइंटर. Everywhere I go, I bring my own. जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपना लेके आता हूँ. Because it's a lot more professional if I can stand here looking at my audience pressing a button rather than getting down every time I'm changing the slide. तो अगर मेरे पास स्लाइड चेंजर हो तो बहुत अच्छा दिखता है और नहीं तो मेरे को बार-बार लैपटॉप में हाथ दे के उसको करना पड़ेगा. Or signaling to the person over there to change the slide. या एक आदमी को बार-बार बुलाऊं कि स्लाइड को चेंज करो. So your goal is to run professional business presentations where your distributors have a high level of confidence so that they bring all their prospects. तो आपका गोल है कि एक अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कीजिए ताकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सामने लाए. And you never get up during a presentation. और प्रेजेंटेशन के वक्त आपको उठना नहीं चाहिए. It doesn't matter how bad you have to go to the bathroom, you don't get आपको up. अगर बाथरूम भी लगे तब भी आपको बैठे रहना चाहिए. And if you do get up, make sure you come back in. Don't just stand in the back of the room because all the guests are thinking, he's so disinterested, he's left. और अगर आप बाई चांस जाना भी हो आपको बाहर तो आप उसके बाद अंदर भी आ जाइए, बाहर खड़ा मत रहिए ताकि गेस्ट को लगे कि वो वापस भी आ गया है. But if you come back to your seat, they're going to say, oh, he just went to the bathroom. पर जब आप वापस आते हो तो उनको समझ में आता है कि आप बाथरूम से आए हो. And also remember, these are business presentations. This is not a play school for children.
और आपको ये ध्यान दीजिए, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ये स्कूल नहीं है। It's never okay for people to bring their children. और कभी भी बच्चे को नहीं लाना इस मीटिंग में। Yeah, you got some child running up and down the aisle. It's distracting to everybody in the room. एक बच्चा यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। And the professionals you want are going to be completely turned off to the kid who's screaming in the back of the room running around. और जो प्रोफेशनल हैं, जो लोग अच्छे लोग आएंगे, वो सब ये देख के काफी उनको अच्छा नहीं लगेगा। In Mumbai, there was a family that brought a little child. मुंबई में एक फैमिली था जो ने बच्चा लाया, They came and sat in the front of the room. और वो बच्चा आके सबसे पहले बैठा। I told Hussein, my leader, I said, Hussein, I want them by the back door, and I want somebody back there that if that child starts screaming and making noise, that they leave the room until the child is able to control him or herself. मैंने लीडर को बोला कि ये बच्चे के साथ पीछे बैठो, किसी के साथ, जैसे वो रोता है या चिल्लाता है उसको पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाओ। Yeah, there's no prospect that is so important for you to encourage them to bring their children because they don't have a babysitter to undermine everybody in the room. कभी भी ऐसे एडजस्टमेंट कीजिए कि घर में उनके पास कोई नहीं है बच्चे को रखने के लिए, इसीलिए वो बच्चा लेके आएंगे। कभी भी ऐसा मत बोलिए आप, उनको बच्चे को घर में ही रख के आना पड़ेगा। Have you learned some things? Yes. I have 5 minutes. 5 मिनट और बाकी है मेरा। So I got one thing I'm going to tell you. अभी मैं और एक बात बोलूंगा आपसे। When a person makes a decision to get started, you schedule a time to meet with them within 48 hours. जब एक आदमी बोलता है कि मैं आपका बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो 48 आवर्स के अंदर उसको मिलना है आप। And you do it within 48 hours because I've learned that if you don't get together with somebody who's made a decision to get started within 48 hours, 50% of them will not get started. अगर आप 48 आवर्स के अंदर उसको नहीं मिलते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 50% वैसे लोग कभी भी आपके बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। And you send them an email with a PDF of the training system that you follow, and you ask them to review step 1, getting started. और आपका ट्रेनिंग सिस्टम का जो पीडीएफ का जो स्टेप 1 है, उसको आप मेल कर सकते हो, उनको पढ़ने दे सकते हो, उसके बाद उनसे फिर दोबारा बात करोगे। Ask them to complete their goals and come to the session that you're meeting with them to be prepared. और फिर सबको पढ़ने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद आपसे वो मिलने आएंगे। When you meet with them, you're going to go over the steps to getting started. जब आप मिलोगे, आपने जो फाइल भेजा था उनको, उसके बारे में उनको पूछना है। They're going to become a distributor. वो बनेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। They're going to place an order. एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। You're going to discuss their commitment. उनका कमिटमेंट के बारे में पूछोगे। The things that are in your training program under step 1, getting started. सारा कुछ जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में है स्टेप 1 के अंदर। If somebody is not willing to place an order to get started, don't even enroll them. जो आदमी हमारे प्रोडक्ट्स के को ऑर्डर प्लेस भी नहीं करते हैं, उन लोगों को एनरोल ही मत कीजिए। Don't enroll them because you're thinking, well, I don't want somebody else to enroll them, so I'm going to go ahead and enroll them even though they're not placing an order. ऐसे कई बार सोचे कि अगर मैं इसको एनरोल नहीं करूं तो कोई दूसरा कर लेगा, तो बेटर उसको मैं एनरोल कर लेता हूं। Let somebody else waste their time enrolling them then. किसी और को अपना समय नष्ट करने दीजिए और उनको दे दीजिए उसको। Yeah, no more enrolling people who don't place an order. आज से ऐसा एनरोलमेंट मत कीजिए जो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करते। You're wasting your time enrolling people who don't place orders. समय नष्ट कर रहे हैं आप लोग उनके साथ। I would never process somebody's application until they are ready to process their order at the same time. मैं किसी का एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करूंगा जब तक वो अपने ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करते। And you need to be teaching this to your teams. और ये सारा कुछ अपने टीम को आप समझाइए। You're bringing in a lot of people. आप बहुत लोग ला रहे हो। And we need to make sure these people are getting started correctly. और ये सब जो लोग आप ला रहे हो, इनको हम लोग सही तरीके से स्टार्ट करना है। So everybody gets started within 48 hours. सब लोगों को हम लोग 48 आवर्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। You review with them the steps to getting started. उनके साथ वो आपके जो स्टेप्स है उनको बताइए। Because the way you get someone started, you're teaching them how we start people. Because आप जिस तरह से उनको स्टार्ट करते हैं, आप ऑलरेडी उनको सिखा रहे हैं हम लोग बिजनेस में लोगों को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। It's all what is duplicated. सारा कुछ डुप्लीकेशन है। All right? I think it's time. We're 2 minutes early.